Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, we are learn about the Indian constitutions. Now, start with the new chapters. Chapter number 3, the silent features and the characteristic of the constitutions of India. And the today's topic is the silent features of constitutions and the feature fundamental rights. So basically, the constitutions of the India is a unique constitutions. Unique constitutions. It is the largest written liberal democratic constitutions of the world. So constitutions of the इंडिया इज़ द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत ख़ास है और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वर्ल्ड यानी कि हम जो लिखते हैं रिटन में, उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोस्ट्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. सो इट प्रोवाइड्स फॉर द mixture of the federalism. It's provide for the mixture of the federalism and the unilateralism and flexibility with the rigidity. यानी कि जो हक है वो so since it's the inaugurations on the 26th January 1950, the constitutions of the India has been successfully guidelined the path and the progress of the India. So the silent features of the constitutions of the India can be discussed as the first one is the written and the detailed constitutions. So constitutions is wholly written document which incorporate the constitutional law of India. So basically it was fully debated and duly enacted by the Constitutions Assembly of the India. Enacted means अमलमा मुको, इन्हें applicable करो. So it took the assembly in a 2 years 11 months and 18 days to write and enact the constitutions. यानी कि 1947 से लेके 1915 तक उसको लिखा गया, यानी कि 2 years 11 month and 18 days लगे उसको लिखने के लिए और उसके बाद उसको एप्लीकेबल करे, यानी कि इनहेंस दी कॉन्स्टिट्यूशंस. सो Indian constitutions is the very detailed constitutions. It consists of the 448 articles divided into the 25 parts with the 20 schedules and the 104 constitutional amendment. So it is the constitutions of the both the central and state of the Indian Union. It is indeed much bigger than the US constitutions, which has only the 7 articles, and the French constitutions with its 89 articles. So हमारा जो आर्टिकल्स है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं, उसके 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है एंड 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जबकि यूएस में 7 आर्टिकल्स है और फ्रेंच इज 89 आर्टिकल्स. नाउ द सेकंड साइलेंट फीचर्स है द सेल्फ मेड एंड इनेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन. इनेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एप्लीकेबल, अमल में मुख्य ए. So the Indian Constitution is the constitutions made by the people of the India acting through their duty elected and respective body, the Constitutional Assembly, that was origin in the December 1946.
So the Constitutional Assembly that was organized in the December 1946 in the first sessions was held on the 9th December 1946. So it passed the object resolutions on the 22 January 1947. So thereafter it is the initiate the process of the constitutions making in the right earnest and was in the positions to the finally pass and adopted the constitutions on the 26th November January 1950. So we celebrate this day as on our Republic Day. So the constitutions of the India is thus a self-made and duly enacted constitutions. So जनवरी 26 जनवरी 1950 को ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली ऑपरेट हुआ और उसकी वजह से हम 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और इसकी वजह से ये पूरा जो हमने रिटर्न किया है उसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी सेल्फ मेड यानी कि हमने खुद ने बनाया है एंड ड्यूली इनेंच्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमने खुद ने अप्लाई किया है यानी कि अमल में रखा हुआ है. देन आफ्टर द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीमेबल मीन्स दी प्रस्तावना यानी कि जो हम प्रस्ताव करते हैं प्रेजेंट करते हैं वो. So the preamble to the constitutions of the India is well drafted document which state the philosophy of the constitutions. So it declares the India to be the serving socialist secular democratic republic and a welfare state community to the secure the justice, liberty and equality for the peoples and for promoting the fraternity, individual and unity integrating of the nations. So the preamble is the key to the constitutions and it state in the nutshell. Nutshell means the kshamta, the nature of the India state and the objective it is the community to secure for the peoples. So nutshell यानी कि क्षमता जो है वो object is the main object is the community to secure for the peoples. Then after the India is the democratic socialist state यानी कि लोकशाही समाजवादी, जो हम जब 10th में थे तब पढ़े थे कि समाजवादी क्या है लोकशाही क्या है. तो इंडिया इज़ द डोमेस्टेटिक यानी कि लोकशाही एंड द सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी स्टेट है. सो ऑल्दो राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज fully reflected the spirit of the democratic socialism. It was only in the 1976 that the preamble was amended into the include the term is the socialism. यानी कि 1976 में हमको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि ये जो मीनिंग है लोकशाही है उसके बारे में पता चला एंड देन आफ्टर हमने उसको अमेंडेड के हिसाब से यानी कि कलम के हिसाब से इंक्लूड किया इन द टर्म इज द सोशलिज्म यानी कि समाजवादी. सो इट इज़ नाउ द रिगार्डेड एज द प्राइम फीचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स. सो अनदर वन इज द इंडिया इज द secular state. Secular means the बिन सांप्रदायिकता.
So India gives the special status to no religions. This make is different from theocratic state like the Islamic Republic of the Pakistan or other Islamic countries. So further, India secularism guaranteed equal freedom to all the regions. So the constitutions grant the right to religion freedom to all the citizens. So इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि देर आर द लॉट ऑफ द रिलीजियंस एंड द ऑल रिलीजियंस इज राइट टू फ्रीडम टू डू द वर्क्स एज अ फ्रीडम टू द ऑल सिटीजन्स. So and then after the India is the democratic state यानी कि लोकशाही है. So the constitutions of the India provide for the democratic state the authority of the government rests upon the serving of the peoples यानी कि the people enjoy equal political rights. Then the people on basis on this the right, the people freely participate in the process of the politics. They elect their governments. Free, fair and the regular elections are held for the elective governments, and for all the activities the government of the India is responsible before the peoples. यानी कि यहाँ पे सबको लोकशाही है, इसलिए गवर्नमेंट सेट और करने के लिए सबको आज़ादी दी हुई है. वो अपने अथॉरिटीज़ यानी कि राइट्स के हिसाब से वो पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं पॉलिटिकल में, और दे हैव ऑल्सो गेट दी फ्रीडम फॉर दी राइट्स टू सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स. यानी कि हमको पता है कि हम जिस पार्टी को या जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बट दे हैव द क्राइटेरिया द 18 years इज मस्ट बी कंपल्सरी. Then after the India is the republic यानी कि प्रजासत्ताक. So the preamble declares the India to be the republic. So India is not ruled by the monarch or the nominated head of the state. Monarch means the राजा. लोकशाही राजाशाही नहीं है. जैसे कि हम जानते हैं कि लंदन में राजाशाही है, यानी कि जो लंदन की रानी है वही जो बोलती है वही रूल्स होते हैं, और ना ही यहाँ पे कोई हेड ऑफ द स्टेट है. So India as an elect head of the state whose will power for the fixed term of the 5 years. हेड है बट उसकी अथॉरिटी 5 साल के लिए होती है. देन आफ्टर यू कैन चेंज द पॉलिटिशियंस. Then after the India is the union of the state. So the article 1 of the constitutions declared that the India that is the Bharat is a union of the state. Union यानी कि एकता जिसको बोलते हैं वो स्टेट है. So the term union of state show the two important features. The first one, that India Union is not the result of voluntarily agreement among the serving state, and the another one is the state of the India do not enjoy the rights to schedule from the Union. The Indian Union has now 28 states and the 7 union territories. So after the declarations, they have the two main points for the union of the state. Now then after the mixture of the फेडरलिज्म एंड यूनिटरिज्म जो हमने आगे देखा है, तो उसका मीनिंग क्या है. फेडरलिज्म मीन्स द संघवाद एंड यूनिटरिज्म इन द एक सप्ताह एकरूपता.
So while the describe the India of the Union of the state, the constitutions provide for the federal structure with the unique spirit. So the India is a quasi federalism, यानी कि अर्ध संघ, or the federations with the unilateral base or even the unilateral federalisms. So like the federations, the constitutions of the Indian provide for the divisions of the powers between the central and state. उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सेंट्रलाइज और दूसरा स्टेट वाइज. देन द written rigid and the supreme constitutions. Then after the independent judiciary with the power to decide the center or state dispute, and the dual administrations that represent the central and state administration. So these are the divided in the two main different parts, the central governments and the state governments. So the India is the federations with the some unilateral features. These mixtures of the federalism and unilateralism has been done keeping in the view both the pluralistic nature of the society and the presence of the religions diversities, as well as due to the need for the securities unit and the integrating of the nations. The another one is the mixture of the rigidity and the flexibility. Rigidity means the कठोरता, कौन सी चीज़ कठोर है और कौन किसको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है. So the constitutions of the India is the rigid in parts. Some of its the provisions can be amended in the difficult way, while others can be amended very easy. यानी कि कुछ एम्बेडेड ऐसे है कि जिसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस है, जैसे कि क्राइम है उसकी बात करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कड़क है, और कुछ में इजी होता है. तो जुडिस को हम कंपेयर करते हैं. So in some case of the union parliaments can embed some parts of the constitution by passing the simple laws. So the Article 368 of the Constitutions provide for two special methods of the amendment. The first one is the most of the provisions of the constitutions can be amended by the Union Parliament by passing the amended bill by a measure of the total membership and 2/3 of the majority of the members present and voting in each of these two houses. जो फर्स्ट अमेंडमेंट के लिए हमको पता है जो रूल्स है, तो जो पार्लियामेंट में है उसमें 2/3 जितने लोग का जो अप्रूव होता है तो वो अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, अदरवाइज पास नहीं होता है. एंड द सेकंड मेथड इज फॉर द अमेंडेड of the some special part, a very rigid method has been provided. Under it, the first the Union Parliament passes the amended bill by the majority of the total membership and 2/3 majority of the member present and voting in each houses, and then it goes to the state legislature for the ratifications. यानी कि दूसरा जो है उसमें फर्स्ट में क्या होता है कि मेजोरिटी जो है उस बेसिस पे और 2/3 मेजोरिटीज होनी चाहिए वोटिंग की. दूसरे में ऐसा है कि रिजिड पोर्शंस में कि कुछ ऐसे अमेंडेड होते हैं जिसमें सभी की सहमति होनी ज़रूरी है. देन आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स, today's topic we can only discuss the main points of the fundamental rights. In the next chapter we can see the in details. So you can see that the fundamental rights, right means the hug. So the under it's the part 3
यानी कि आर्टिकल 20 to 35 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया grants and the guarantee fundamental rights to its the citizens. It is called the Indian Bill of Rights. Initially, the 7 fundamental rights were granted, but after the declarations of the rights to property from the first of the fundamental rights in the 44th Amended Act 1979, so this number came down to the 6. So basically you can see here the articles 19 to 32 will be seen in the पेज. हम आगे के 1 to 14 कब आएंगे और किस तरह से है उसमें थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है कि 12 से लेके 35 जो है आर्टिकल्स उसको हमने गारंटेड दिया है और आगे के 7 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है. सो फंडामेंटल राइट्स आर डिवाइडेड इनटू द 6 मेन पार्ट्स. The right to equality, right to freedom, right to against the explorations, right to freedom of religions, cultures and education rights, and rights to constitutional remedies. So article 14 to 18 is the right to equality, यानी कि सबको समान हक देना. So in the article 14 is declared that the equality before the law and the equal protections of law. Article 15 is prohibitions of the discriminations on ground of the religion, race and etc. Then article 16 is the equality of the opportunity in the public employment. Then article 17 is says that about the abolitions of the untouchability, and the article 16 is the abolitions of the titles. Then after the rights to freedom in the article is 19 to 22. In the 19 says that the 6 rights: freedom of the speech and the expressions, assembly, then associations, movement, residence and professions. यानी कि जो 6 राइट्स है जैसे कि फ्रीडम है, फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, असेंबली है, देन एसोसिएशन है, उसमें सबको बराबर का हक है यानी कि फ्रीडम है. देन इन द 20 आर्टिकल्स द प्रोटेक्शंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशंस फॉर द ऑफ्टन्स. Then article 21 the protections of the life and the personal liability. 22 में है the protections against the arrest and detentions in the certain case. Then after right against the explanations in the article is covered in the article 23 and 24. So article 23 is the prohibitions of ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स द लेबर्स. हम जो लेबर्स है उसको फोर्सफुली वर्क नहीं करवा सकते, बर्डन यानी कि मेंटली हैरेसमेंट नहीं कर सकते. देन ट्रैफिक ऑफ इन द ह्यूमंस यानी कि हमको पता है कि जैसे कि बच्चों से काम करवाना और वो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है. देन आफ्टर द आर्टिकल 24 the prohibitions of the employment of the children in factories etc. जैसे मैंने आगे बताया कि जो फैक्ट्रीज है और यहाँ तक हमारे घर में जो काम करने के लिए आते हैं उसमें भी हम बच्चे को नहीं रख सकते क्योंकि दिस इज द अगेंस्ट ऑफ द आर्टिकल्स 24 द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लेशन. देन आफ्टर द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियंस. जो रिलीजियन के बारे में आर्टिकल्स है 25 to 28. In the 25 the freedom of the conscience and free professions practice and the preparations of the religions. And then article 26 is the manage the religion affairs. Then 27 is the freedom from the payment of
taxes for the promotions of any religions, and the Article 28 is the freedom for the attending religions instructions or worship in certain education institutions. Then after the आर्टिकल 29 टू 30 यानी कि दो जो आर्टिकल्स है इसमें कवर किया हुआ है द कल्चर्स एंड द एजुकेशन राइट्स. सो 29 इज द प्रोटेक्शंस ऑफ द इनबिट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, यानी कि जो पछात लोग है उसको प्रोटेक्शंस और द एजुकेशन मिलना चाहिए एंड द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश and the administer education institutions. And the last articles 32, the rights to constitutional remedies, so they have includes the hips crops, then mandamus, prohibitions, stuttered and quo warranto, यानी कि जो वारंट्स होता है उसके रिगार्डिंग ये एमेंडेड और आर्टिकल्स है. सो इफ तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स इज रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम्स, देन द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम struggles, then uphold and protect the sovereignty, unity and the integrity of the India, then defends the country and reader nation service when called, then the promote the common brotherhood of all the peoples of the India and renounce any partisans, presents the rich heritage of the nation's compositions, cultures, the project the natural environment and have the compassion for the living creatures, then the develop scientific tempers, humanisms and spirit of uniquity and reform, then satisfactory public properties and the abject violence, strive for excellence in all the individuals and the collective activities, duty of the parents to send their child to school for the getting the educations. Then directive principles of the safety policies. So in the part 7 of the constitutions dealing with the directive principles of the state policy provide one of the most striking features of the Indian constitutions is the aim of the parts is to secure and strengthen socio-economic democracy in India. So if any query regarding this topic and the question regarding this topic, you can contact me and mail me. A mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.